Hello my wonderful kids, welcome to Audio Achievers. In today's video, we are going to start the next chapter, that is combustion and fuel, and in this video I am going to cover the basic definition of combustion and combustible, non-combustible substances and the different types of combustion and what are the conditions required for combustion. Okay, but before that, positive thought. Okay, which says that a goal without a plan is just a wish. That if you have some goal but you don't have the planning to achieve that goal, that means it is simply a wish. I'm wishing to achieve something but I don't have any planning to achieve that. So if you have some goal, then definitely have a planning to achieve that goal and then work towards that goal to achieve it. Fine. Okay, now moving on to the topic. Let's understand what is combustion. Okay, अगर हम combustion की बात करें तो combustion has been a very important phenomena not from now but from the years back, from our ancestors and their ancestors' time. अगर हम बात करें beginning early human beings की, तो you are aware that they had started living together, they started living in the caves and they started cooking food. Now, when it came to cooking food, you are aware that they learned to burn few things. And you can understand it would have happened thousands of years back. जब उन्होंने wood को जलाना सीखा होगा and they used it in different ways. They used it to protect themselves from the wild animals. They used it to cook the food and to lighten their area. Fine. So this has been a very important phenomena. And if you have a look at the present situation, all the processes going on around us are because of this one process. If you take example of our food getting cooked, it is because the CNG is available in the houses. Even if you talk about the electricity available to us, because some coal is burning somewhere, some petrol is burning somewhere, some phenomena in the thermal power plant, coal is burning to produce then electricity. If you talk about our vehicles moving, that means the petrol is getting burned in it, diesel is getting burnt in it, and the energy is being used in moving these vehicles. So here, when we talk about this combustion phenomena, it has been a very important phenomena from the beginning. Let's now understand that what this combustion is. So when we talk about combustion, it's nothing but the burning of any substance in the presence of oxygen. कि oxygen की presence में जब भी कोई चीज जलती है, that is combustion. Fine. And when we talk about the different things that are available around us, अगर हम उनको combustion के basis पर divide करें कि क्या वो जलते हैं या नहीं जलते हैं, तो हम देख सकते हैं they can be divided into two major categories: combustible substances and non-combustible substances. अगर हम बात करें इसमें further, तो अगर हम बात करें combustible substances की, like you can see here, it is the wood which catches fire easily. Combustible substances कौन से हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं और जलने लग जाते हैं. Fine. जैसे wood हुआ. अगर next हम बात करें तो this lamp, which I think you will remember in the olden times we used to have. I remember my grandmother used to have this and it used to work on the kerosene. Fine. And if we talk about non-combustible substances, non-combustible कौन से हैं? They do not catch fire easily in the presence of air. Okay? Or oxygen. You would have rarely seen, or in fact not seen, water burning ever. You would have not seen the soil burning ever. Okay? Because they do not burn easily. Fine? So these are the combustible and non-combustible substances. Moving on further, when we think about what are the conditions required for burning, कि burning के लिए चाहिए क्या होता है? Fine? So there are few things which are required for combustion. What are they? First, तो if it is combustion, then कुछ जलने के लिए चाहिए होगा. Either आप wood जलाएं, आप petrol जलाएं, आप coal जलाएं. Fine. So some combustible substance will be required. Second thing, supporter of combustion. कि combustion को support करने के लिए कोई चीज चाहिए. जैसे normally जो हम air से oxygen ली जाती है, ये oxygen combustion को support करती है. Fine. The next thing is the temperature of that substance should reach its ignition temperature. Now, हमें इसका मतलब क्या है ignition temperature? I'll explain you. But first understand कि आपने देखा होगा अगर wood गीली होती है तो it doesn't burn. The wet wood doesn't burn. उसको आपको बहुत heat करना पड़ेगा and then it will start burning, because after heating a lot it will become that much warm that it will start burning by itself.
ओके तो इसके पीछे रीज़न यही है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ही चीज़ें अब जलना शुरू होती है या उनका कंबशन स्टार्ट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एनीथिंग कैचेस फायर वो कहलाता है उस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर। ओके इग्निशन टेम्परेचर अगर हम बात करें, देखो कैरोसिन का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, डीजल का ले लीजिए, वुड का ले लीजिए, इन सब का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होगा जब ये फायर कैच करेंगे। फाइन, यूर अवेयर कि पेट्रोल कितना जल्दी फायर कैच कर लेगा, उतना वुड जितना जल्दी नहीं करेगा। फाइन, इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी मैं अगर बारिश के दिनों में वुड गीली हो जाए और हमें खाना बनाना हो तो लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा कैरोसिन डाल देते हैं वुड के ऊपर ताकि वो जल्दी आग पकड़ ले। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बिफोर दैट व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, हाउ विल इट डिफाइन इट, दैट इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू होगी। फाइन, keep that in mind. Fine, and there are few substances which have very low ignition temperature, जैसे CNG है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें जो जल्दी आग पकड़ती है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा ना ट्रक्स जो लेके जाते हैं पेट्रोल, डीजल, CNG, उनके ऊपर पीछे लिखा होता है इनफ्लेमेबल, बड़ा बड़ा। Why? Because if they will catch fire then it will result into a huge fire and we have to prevent that, we have to take care, that's why it is it. Okay, now let's do one activity. Let's observe that activity, or you can try it at home with the supervision from your mother, that how can we investigate the ignition temperature, कि ignition temperature को हम कैसे पता करें क्या होता है basically। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, we have taken a glass, we can take a glass paper cup of or a coffee cup जो हम कहते हैं, that both not the thermocol one, okay, इसको हम heat करते हैं with, now if you will heat this without having water in it, it will start burning, but if you have taken a water and filled inside it, then what will happen, let's observe. If you will try this activity, in the first, when you were not, if this paper cup was not having water in it and if you are heating it, then what happens, the paper cup catches fire and it start burning. Now why it is so, because its ignition temperature reaches very fast, because paper cup का जो टेम्परेचर हीट है जो एब्जॉर्व कर रहा है फ्लेम से, इट टेक्स इट्स टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर क्विकली एंड उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है एंड ईजिली रीच हो जाता है एंड वो पेपर का बर्न होना शुरू हो जाता है। इन द सेकेंड कंडीशन क्या होता है, इफ़ यू फिल्ड इट विद द वाटर, आई एम श्योर यू वुड हैव ट्राइड इट, my kids have done it, but if you have not tried, take the help from mama and you can try it, or ask your teacher to do it for you. But what you have to do, you have to fill it with the water and इसको आप, it is just a like picture I've shown you, but you can put on a tripod stand or you can hold it. Holding will take time, but you can just put on the tripod stand and heat this paper cup. Keep the flame on low, okay, and observe it for some time. So what do you observe? That when the paper cup is having water is heated, then paper cup does not burn and the water start boiling. अगर आप उसको हीट करते रहें तो क्या होगा, पेपर कप बर्न नहीं होगा, वाटर इन द पेपर कप विल स्टार्ट बॉइलिंग। नाउ व्हाई इट इज सो, बिकॉज the heat from that flame is getting transferred into paper cup, and from paper cup the heat is getting transferred into the water, and the water will keep on absorbing that heat and the water will start boiling and evaporating also. Fine, but the paper cup does not burn so easily. First the temperature will reach of the water, the heat will be absorbed by water. When the water will stop taking more of heat into it, then the paper cup start heating up. Fine, so this way we can understand that the same paper cup had started burning earlier, and when the water has been filled it in, when the heat is not increasing, the temperature is not increasing of paper cup, it does not burn. Let's now talk about the different types of combustion. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से जलती हैं। सेकेंड कि जो ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस जो कंडीशंस अवेलेबल हैं वो भी अलग अलग होती हैं और उस बेसिस पे कंबशन की डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंप्लीट कंबशन एंड सेकेंड वन द इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन कभी कभी कंप्लीट हो सकता है, कभी कभी इनकम्प्लीट होता है। वो कैसे होता है कंप्लीट कंबशन?
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सब्सटेंसेस के बर्न होने में ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कंप्लीट है, प्रॉपर है, तो कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी इनसफिशिएंट है देन क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, क्योंकि हमने कहा ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर वो नहीं होगा तो कंबशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीन्स इट विल नॉट बी सपोर्टेड, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। फाइन। और जब कंप्लीट कंबशन होता है द फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। फाइन। मोस्टली जो हमारे फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स जो हम बर्न करते हैं, अदर लेट बी कोल, पेट्रोल, डीजल, या फिर हम वुड की बात करें, इन सब में, ये सभी में हमारा कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। वी हैव डिस्कस्ड इन द metals and non-metals, so it is basically the carbon, और कार्बन कंटेनिंग चीज़ें जब बर्न होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, एंड इन दिस द मेन प्रोडक्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट कंबशन की, तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, हियर द फ्यूल डज नॉट बर्न कंप्लीटली, फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, और उससे क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इसमें काला सा धुआं उठता है और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंड इसमें जो सेकेंड थिंग है वो है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स सिंगल ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कहाँ प्रॉब्लम है, इट इज़ a poisonous gas, because अगर हम इसको इनहेल करते हैं, नॉट ओनली वी, एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इफ़ दे इनहेल दिस कार्बन मोनोऑक्साइड देन व्हाट हैपन्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में रोटेट होने लग जाता है, तो हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता है, और ऑक्सीजन के नहीं अवेलेबल होने से क्या होता है, वी कैन सफोकेट एंड वी कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट। Now here you can see in the this kitchen gas burner, you can see that complete combustion is taking place, तो आपको कैसा क्लीन फ्लेम मिल रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये हमारे जो ओल्ड ट्रेन इंजन्स हुआ करते थे, बट डजंट फंक्शन एट मेनी प्लेसेस नाउ। अगर आप उसमें देखो ऊपर कितना काला सा धुआं निकल रहा है, बिकॉज इन दिस व्हेन द कोल इज गेटिंग बर्न्ड sufficient oxygen is not available, and that's why unburnt carbon particles are also getting produced. So this is what the complete combustion and incomplete combustion. अब अगर इसमें incomplete combustion हो रहा है, that means यहाँ पर energy जो produce हो रही है वो भी कम होगी। Fine. Now the next type of combustion is our rapid and spontaneous combustion. अब rapid और spontaneous combustion में क्या होता है, जैसा कि word indicate कर रहा है rapid, मतलब कोई भी चीज़ बहुत rapidly burn होती है। Okay? जैसे for example बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, जैसे आपने फ्रिक्शन क्रिएट किया वैसे ही उसने आग पकड़ ली। और ऐसी चीज़ों के रैपिड कंबशन के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल इग्निशन चाहिए होता है, कि माचिस पड़े पड़े अपने आप से नहीं जलेगी, यू हैव टू provide some heat in the form of friction. You're doing friction is created and the heat is produced by friction, and that heat is very very small, but उससे फिर इसमें these substances catch fire. अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस कंबशन की, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इग्निशन इज नॉट रिक्वायर्ड। हियर द सब्सटेंस कैन कैच फायर, स्टार्ट बर्निंग बाय इटसेल्फ आल्सो। जैसे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर। फाइन, फॉरेस्ट फायर्स में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यू वुड हैव सीन लाइक द लास्ट सेशन, लास्ट season, summer season, the forest in America caught fire. So how it happened? Because the heat got increased, and when the wind was blowing, and because of that heat increased, the forest caught fire. तो ये क्या होता है, spontaneous combustion. इसके लिए बाहर से कहीं से ignition नहीं चाहिए होता है. They can start burning and they spread very fast. It becomes like an explosion and they burn very fast. And that type of combustion is called spontaneous combustion. Fine. So this was rapid and spontaneous combustion, and the last type which we discussed was the complete and incomplete combustion. Fine.
That's it for today's video. If you have any question, anything which comes in your mind which you want to ask me, please write in the comment box. I will be happy to answer. And if you have liked the videos which I'm making, subscribe to the channel and share it with your friends. Okay, because it serves as a motivation, and I feel happy that okay, the videos which I'm making are helpful for some of my students. Fine. Thank you for watching it, achievers. Take care.